वेलकम बैक टू कोर्टेक्स। आज हम करने वाले हैं कॉन्फ़िगर क्लाउड स्टोरेज बकेट फॉर वेबसाइट होस्टिंग यूजिंग gsutil। फर्स्ट वी विल स्टार्ट लैब। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ चैलेंज लैब, यानी कि इस लैब में आपको कोई कमांड्स नहीं दिए हुए हैं, इंस्टेड आपको एक चैलेंज सिनेरियो दिया गया है जिसके बेसिस पर आपको कमांड्स को क्रिएट करना होगा टू कंप्लीट द गोल एंड कंप्लीट दिस चैलेंज। उसके बाद आपको चेक माई प्रोग्रेस करना है, जिसके पूरा हो जाने के बाद आपका लैब कंप्लीट हो जाएगा। सो इस लैब में मैं आपको पहले उन सारे के सारे कमांड्स का एक्सप्लेन करूंगा। सो लैब ओपन होने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा फॉर द कमांड्स। दीज आर द कमांड्स। नाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट copy pasting them blindly, first you have to copy your bucket name from here, come back and write it here. अब मैं आपको सारे के सारे कमांड्स का ब्रीफली एक्सप्लेनेशन दूंगा। सबसे पहले हम बकेट नेम वेरिएबल को सेट कर रहे हैं यूजिंग दिस कमांड। इससे हमारा क्लाउड स्टोरेज बकेट नेम एक वेरिएबल में स्टोर हो जाता है, ताकि हम उसे बार बार उसे रिपीट ना करना पड़े, इतना बड़ा कमांड। नेक्स्ट हमारा सेकंड जो कमांड है, इट कॉन्फ़िगर स्टैटिक वेबसाइट सेटिंग्स, यानी कि दिस enables static website hosting by defining the main index page and error page, as you can see. Next, in this command we disable the uniform bucket level access. This turns off uniform access so we can control permissions at the object level. Next command, we set the default ACL for public access. As you can see, def ACL set public, so that this makes all newly uploaded files publicly readable by default. Next, we have to use this command to make the index page publicly accessible. Same this command for making the error page publicly accessible. This command for making the CSS file publicly accessible. And then we will use this command to make the image file publicly accessible. Now copy these commands together and paste them here. अब ये कमांड्स यहाँ पे रन होंगे। सो बेसिकली मैंने आपको सारे कमांड्स का एक्सप्लेनेशन बताया है कि कौन सा कमांड क्या काम कर रहा है एंड किस तरीके से इस लैब को कंप्लीट करने में हेल्प कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड आप चीजें समझ आई तो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब। इन कमांड्स को हमें रन होने देना है। डोंट प्रेस एनीथिंग। Now click check my progress and it's completed.